तो गुड मॉर्निंग डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने अपने कमेंट दें, ठीक है, लाइक करें। और आज आप देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो बिफोर कमिंग टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जस्ट सी, you have seen in schools and college सीसा, बीच में फलक्रम है, दोनों किनारे बच्चे बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन, राइट, दे आर गोइंग अप एंड डाउन परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन. If you hang a magnet which is in Earth's magnetic field, now if slightly displaced it performs pure rotational motion. तो पहले वो मैकेनिकल डाइपोल था, वो मैग्नेट एज ए डाइपोल, इस समय बातें हो रही इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो व्हाट दिस, एक अरेंजमेंट बनाना चाहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्योर रोटेशनल मोशन कर सके, राइट. सो हाउ कैन बी दिस अरेंजमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट in which two charges of equal magnitude but opposite in nature. मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और नेचर अपोजिट होना चाहिए. प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस. सपोज ये माइनस क्यू चार्ज है, उतना ही मैग्नीट्यूड में बराबर बट मैग्नीट्यूड में अपोजिट, नेचर में अपोजिट प्लस क्यू चार्ज ये है. दोनों के बीच सेपरेशन सपोज एल है. यदि आप सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देखें, मान लो ये पॉइंट O है, इस पॉइंट से अगर चार्ज का डिस्टेंस से स्मॉल एल इधर है तो स्मॉल एल इधर होगा. तो टोटल सेपरेशन एल, चाहे उसे कैपिटल, ये सेपरेशन चार्जेस के बीच में, और सेंटर से डिस्टेंस लोगे तो स्मॉल एल, ये दोनों बराबर है. याद रहे, यहाँ अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में सेपरेशन बिटवीन चार्जेस दिया है और उसको भी 2l कर दिया, गलत. जब सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल एल दिया गया है तभी आप उसे 2l करें, ध्यान रहेगा ये. नाउ द फर्स्ट पॉइंट, अगर इसमें देखें, इट हैज टू एक्सिस. वन इज लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, दैट इज सेड टू बी एक्सियल लाइन. दिस इज आल्सो सेड टू बी 10a पोजीशन. व्हाट इज दैट? 10a पोजीशन या line of axis. And a perpendicular bisector, a line passing perpendicular to the line joining charges and perpendicular to their axis is called equatorial line. These are the two axes of the electric dipole. The first quantity which represents the strength of electric dipole. Electric dipole moment. Every dipole what you design, it has certain strength, including जिससे सब्जी तोलते हैं वो तराजू भी आपका डाइपोल ही है. बट तराजू बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है. उसी तरह से डाइपोल स्मॉल भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है. यू हैव इन केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक डाइपोल NaCl, ठीक है, HCl, व्हाट दे आर इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो न्यूमेरिकली electric dipole moment is product of charge, say charge q, and separation between charge, say that is L2L. So P, which is a vector quantity, is equal to q into 2L. So you can say it is vector quantity. अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टूवर्ड्स प्लस क्यू चार्ज. से दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू. So dipole moment is vector quantity. It has direction from negative charge to plus q charge. बिल्कुल उसी तरह से मैग्नेटिज्म में भी नेगेटिव चार्ज की जगह साउथ पोल होगा
और पॉजिटिव चार्ज की जगह नॉर्थ पोल होगा तो वो मैग्नेट डाइपोल है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। बट राइट नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल, the magnetic dipole electric dipole moment is vector quantity having direction from minus q charge to plus q charge, and what it represents? The electric dipole moment represents the strength of electric dipole. How capable is the electric dipole, right? So now we are going to see how much is the electric field due to electric dipole. What we are going to see, how much is the electric dipole, electric field due to electric dipole, right? Electric field due to electric dipole at a point on its axis, right? Now say this is electric dipole minus q charge, and say this is plus q charge, and this is the axis of the electric dipole, right? Let us take a point P on this. Let's say the point is M on the axis of electric dipole. Since in system there are two charges, so there will be electric field because of these two charges. Say plus Q. Now center point is O. From here the distance of charge is small l and distance of charge is small l, right? Say from center the distance of point is R. Center of the electric dipole, the distance of point M is R. So what it is going to be distance from plus Q charge. So this distance is going to be R minus L, and distance from minus Q to that point going to be R plus L. This is the condition. Now at the point M, electric field due to plus Q charge. Since this is positive charge, so electric field will be away from the charge. Say this is E1, and this is negative charge. So electric field due to minus Q charge at point M is going to be, say, E2. Now this is negative charge, so electric lines of forces will be towards the charge, and that will represent the direction of electric field. So these two electric field will be opposite in direction. Once they are opposite in direction, so we can say net electric field is equal to magnitude of E1 minus, simply we can say vector E1 minus vector E2. ठीक है? So see how much is the value of E1. E1, which is
electric field due to charge plus q, which is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into q divided by, how much is the separation, r minus l square. This is the equation first according to Coulomb's law. Similarly, E2 electric field due to charge minus q, which is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by r plus l का होल स्क्वायर. दिस इज सो नेट फील्ड आपको चाहिए. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, which is equal to E1 minus E2. So take 1 divided by 4 pi epsilon common, q common, in bracket 1 divided by r minus l whole square minus 1 divided by r plus l whole square. If you simplify, magnitude of electric field q divided by 4 pi epsilon naught in bracket 4 r into l divided by r to the power 4 minus l to the power 4. This is the magnitude of electric field, now which can be written as q into 2l. So please note down so that next, right, this is electric field due to electric dipole at a point on its axis. Next, to see further. Now, E can be written as 1 divided by 4 pi epsilon naught into 2 q into 2l into r divided by r square minus r to the power 4 minus l to the power 4. Right? Now q into 2l is electric dipole moment. What is that? Electric dipole moment. So you can write 1 divided by 4 pi epsilon naught 2 into p into r divided by 4 pi epsilon naught r to the power 4 minus l to the power 4. This is electric field for dipole where L is of the order of R. Yeah, much more. But for small electric dipole, L is much smaller than R, hence neglecting L. So electric field is equal to, इसको अगर K लिखें आप, K, this is 2p
और एल को नेग्लेक्ट करोगे तो एक आर यहां से कटेगा, so you get divided by r cube. That means electric field due to electric dipole which is small is inversely proportional to r cube, which indicates do not obey Ohm's law. और ये नहीं भूलना है. तो point charge obeying Ohm's law, but electric dipole electric field is inversely proportional to r cube. It does not obey inverse square law. So this is electric field at a point on the axis of electric dipole. Similarly, we can see electric dipole, electric field at a point on equatorial line. Electric field due to electric dipole at a point on equatorial line. Now say this is minus q and this is plus q. Central point O, this distance L and this distance L, that is small. A perpendicular bisector which is equatorial line. Let us take a point M now here. From center, this distance is R. Now same way as electric field due to two charges on the axis, now similarly electric field due to plus q and minus q. So if you take plus q, this distance going to be under root r square plus L square, and electric field will be in this direction, right? If you resolve it, say this is angle theta, this is going to be angle theta, so it has component here E cos theta and here component E sin theta. Similarly, this is minus q charge. Electric field will be towards the line joining charges. Now this distance will also be equal to under root r square plus L square. Say this electric field is E. If this is distance theta, this is going to be theta. Take the component of this one. Again, electric field is going to be E cos theta, and vertically downward it is going to be E sin theta. This is the diagram of electric field due to electric dipole at a point on the axis. But what you want? So net electric field E sin theta here and E sin theta downward here, they get cancelled. So vertical electric field at point M, vertical component E sin theta
cancels each other. E sin theta, E sin theta, they are equal in magnitude but opposite in nature. So they cancel each other. So how much is the net electric field? That is horizontal component. Hence, net electric field at point M E is equal to 2E cos theta. ठीक है, parallel to axial line but opposite into the direction of electric dipole moment. So this direction is parallel to axis but opposite to dipole moment. This is the direction of net electric field. Dipole moment minus q to plus q, but this field is opposite to the dipole moment और ये नहीं भूलना है. So just keep the value इलेक्ट्रिक फील्ड 2 into E की जगह. अब E की वैल्यू क्या होगी? से 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन की जगह K लिखें. K into Q डिवाइडेड बाई अंडर रूट R square plus L square whole square. This is the value of E. And then cos theta. Cos theta, if this is the theta, cos theta is base divided by hypotenuse. So this is L divided by under root R square plus L square. So what you get? E is equal to 2Q into L is going to be dipole moment divided by R square plus L square to the power 3 by 2. This is electric field intensity at a point on equatorial line. If L is much smaller than R, then electric field is going to be Kp divided by Rq. So this was electric field due to dipole at a point on equatorial line. Is that point clear? So electric field on axis, say this is Ex, which is 2 Kp divided by R, and electric field on equatorial line, say Ey, which is equal to Kp divided by Rq for a small dipole. Right. Now let's do the postmortem. This is minus q, this is plus q.
This is point A, this is equatorial line, and this is axial line. So in this direction, E is equal to 2 kp divided by r. Whereas here, this is Ey, this is Ex, which is kp divided by r cube. Now this electric field is maximum, so E maximum ये कहाँ पे है? On axis, so this is maximum. और E minimum for given distance on equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन पे ये मिनिमम है. दैट मीन्स इफ यू गो फ्रॉम इक्वेटोरियल लाइन टू एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड increases. But if you go from axis to equatorial line, then electric field decreases. Now, if I ask you, electric field due to dipole is zero, where? तो ये ना भूलें, electric field due to electric dipole is zero only at infinite. It is zero only at infinite. जो ये मैसेज देता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के आसपास कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता. कई बार हम ये सोचते हैं कि प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दुगना होगा, दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा. ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर. तो दोनों, ये लास्ट डाइपोल के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा. हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो. राइट नाउ, अगर आप कोई पॉइंट इन बिटवीन लेते हैं, से दिस इज द पॉइंट, डिस्टेंस और एंगुलर पोजीशन से थीटा, एंड से दिस इज द पॉइंट एन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आर थीटा. तो जब आप इक्वेटोरियल लाइन से एक्सिस पे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, और एक एक्सिस से इक्वेटोरियल लाइन जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है. और इन बिटवीन थीटा इज द डायरेक्शन फ्रॉम द डाइपोल मोमेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, then the position is said to be r theta. So electric field intensity, which is equal to k p divided by r cube in bracket 1 plus 3 cos square theta. This is the electric field at position r theta. और किसी भी सेंस में ना भूलें. अब अगर थीटा इज इक्वल टू, यहां से देख सकते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं, थीटा गोज टू 0 डिग्री, दैट मींस इट इज ऑन द एक्सिस, एंड फ्रॉम हियर यू गेट 2 kp divided by r. If theta goes to 90 degree, that means ये इक्वेटोरियल लाइन है,
और इक्वल टू इक्वेटोरियल लाइन पर EY is equal to KP divided by R cube. So you have all the configuration. So please once more सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने कमेंट दें. थैंक यू वेरी मच.